Okay, so let's get started. As we normally do, I keep on giving or rather sharing my analysis of the market, especially when there is major movement, major movement in the stock market because of various reasons. Sometimes it is the Fed rate decisions, sometimes it is some geopolitical activity, etc. So right now, as we know, there is a war going on between Israel and Hamas, and because of that there is a lot of pressure in the stock market, because there is a fear that this war, which is currently a limited war, can escalate much further and can create even more pressure. So there is a very valid fear that the war might escalate and it might lead to further fall in the market. So we are not sure what's going to happen because we don't know the inside information. But as we normally do or usually do, let us follow the charts, and charts gives us the enough information on basis which we can take our trades, right? So what we are going to do today, let's look at the agenda. So as the markets are falling, everybody is having the same question: what to do next? What is going to happen next? Whether to buy fresh because this is a fall and maybe a good buying opportunity, or whether he or she should sell the holding or just continue to hold whatever holding you have in the portfolio. So these are the three options that people have, everybody has, and analyzing the charts, we'll see what is the best thing to do. Okay. So before we move, you can note down that this is my YouTube channel, RGS for Profit, and my contact number is also there. My Twitter handle is RGS303, Twitter, or now it is called as X, right? X, Twitter, and currently X. So you're welcome to follow me on Twitter, and you're also welcome to subscribe to the YouTube channel. So let's move on. So what we are going to do today is we are going to discuss the Indian market, obviously, but as we normally do, not just the Indian market, but we will also look at what is happening in the global market, because only studying Nifty and Bank Nifty or Indian market is not going to give us the proper insights, because at the end of the day, whatever is happening in the US market or Europe market, that's going to impact India market also, and they are always normally in proportion or in the sync. Okay. So we look at SPX, which is Standard and Poor. Now a lot of people ask me what is SPX. SPX 500 is basically an index, just like we have Nifty 50 in India, which is an index of largest Nifty stocks, largest 50 Nifty stocks. Similarly, SPX 500 is an index of 500 largest stocks in United States. So it is one of the most important indices to follow globally, and most of the indices in the other countries, whether it is European countries or Indian market or Japanese or South Korean market, etc., all these markets follow the SPX to a good extent. So we always look at SPX. Then of course Nasdaq is there. Nasdaq 100 is an index which constitutes the major technology stocks in USA, and gold obviously is gold. DXY is dollar index. Dollar index is again a weighted average of some top currencies against US dollar. Okay, so that also has a bearing on the market activity. So, and of course, we'll discuss about Nifty and Bank Nifty. Dow Jones is another index in US, which is basically having mostly the industrial stocks, an index which reflects mostly the industrial stocks. And then, of course, we'll take some question and answer. And in addition to that, we are going to discuss buy levels for some of the Indian stocks and also buy levels from some of the US stocks. A lot of people are interested in Apple. Excuse me. A lot of people are interested in Apple, what is happening in Facebook. People are also interested in Google, which is on the index, it is Alphabet, and of course, Tesla and Microsoft.
We'll also look at NVIDIA also. I have not mentioned here. NVIDIA is another very hot stock and trending stock. So we'll look at that. I hope everybody is comfortable with English and Hindi. We'll have the discussion in English and Hindi, mostly English, okay? Because a lot of non-Indian participants are also there. So whenever there is a major movement in the market, whether it is a bullish movement, big bullish movement, or whether it is a big fall in the market, there is always this thought with the investors. सब investors के दिमाग में एक पॉइंट जरूर आता है, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये पॉइंट जरूर आता है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट. डिफरेंट यानी क्या है कि ये गिर रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा. अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा. सो नॉट नेसेसरी. व्हाट हैपेंड इन द पास्ट मे और मे नॉट हैपन अगेन. अभी अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है तो आप ब्लाइंडली बाइंग भी नहीं कर सकते. आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं गिरेगा या अभी बहुत हो गया और कितना गिरेगा इससे ज्यादा, राइट. सिमिलरली मार्केट जब बहुत ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी अभी इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो शॉर्ट वगैरह करने का लोग पीपल ट्राई टू गेट इनटू शॉर्ट्स टू अर्ली. सो ये गलती नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज एनालाइज द सिचुएशन एज इट इज. अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है, मार्केट में क्या हो रहा है, रेट हाइक्स का क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो रहा है, ऑल दैट वी हैव टू कंसिडर. सो लेट अस हेड टू द चार्ट्स. आई ऑलरेडी सेट द कॉन्टेक्स्ट कि हमको क्या डिस्कस करना है. तो अभी इट इज टाइम टू लुक एट द चार्ट्स. विल स्टार्ट विद निफ्टी. So this is the Nifty chart on the daily time frame, okay? And as we can see, it has closed below this pink line. Now this pink line is a long-term EMA, and closure below this pink line is always a very bearish sign. If we see the past in August, it bounced from here. It went below temporarily, but bounced from here, and then there was a good rally. Again in October, start of October, it went down, then it recovered, and now finally, or right now, as of now, it is below the pink line. So which means August there was a bounce, a rally. Then first week of October there was a relief rally. I will say it is not really a rally, but it was a relief rally. And now what we are seeing is a strong bearish signal because the close is below this pink line. And now there is a heavy chance that it will slowly move towards this yellow line, which is a higher time frame EMA. So what are the levels we are looking at for Nifty? So currently it is 19,542. So on the higher side, it might go to 19,850. On the lower side, you have support at 19,250 and 18,900. So Monday itself, there is a gap down which is expected, and there is a high probability that it will go below 19,300, or this 19,250 level will be tested on Monday itself. And in a week or two, maybe it can go to 18,900 also. So I mentioned the levels in the summary of the levels. If we look at Bank Nifty, let us look at from the daily time frame. So Bank Nifty currently is 43,700 or 43,720, and on the higher side it can go towards maybe 43,900 or 44,600, and support is 42,250 or 42,300, somewhere in that range. 42,250 to 42,300, that is where the support lies. If that breaks, it can go all the way up to 41,000. I hope that doesn't happen, and it doesn't look likely that it will go straight away. It will definitely find support, or should find support, at 42,250 or 42,300 type of levels. But there's a high chance that it will move towards 42,300 type. So overall, it's a bearish market. Of course, there will be relief rallies, not necessary that it will go down in a single line. So if we look at the moving averages, so there is a bearish cross on 1 hour time frame.
there might be a bearish cross on 4 hours, which will be very bearish, because if we look at 4-hour bearish cross, then the falls are also very significant. So as I said, there will be relief rallies, but overall the trend is bearish unless and until there is some strong improvement or good improvement in the war situation, there is some kind of ceasefire, etc., which looks unlikely currently, because there is the tensions are only growing every day. Okay, so that's about Bank Nifty. So if we look at the levels, I have given the summary here. For Nifty, the range is 19,400 to 19,850. That's the narrow range. On the higher time frame, we can look at a range of 18,900 to 20,400. And overall, अगर हम next week की बात करते हैं, तो और next 1 or 2 weeks की बात करते हैं, तो Nifty should remain in the range of 18,900 to 19,850. तो ये ranges ध्यान में लेके, according to these ranges, you can have your if you are doing derivative trading, you can adjust your strategies accordingly. And of course, if you are doing spot trading, अगर आप delivery में buying कर रहे हो, so at these levels you can look at doing the buying. So 18,900 के आसपास definitely buying के chances है, buying के opportunities है, and I will share those buy levels for different stocks also. Similarly, for Bank Nifty, if we look at a narrow range, currently it is 43,723 or roughly 43,700. So it will range between 43,500 to 44,000. And the broader range is 42,200. Broader range is 42,200 to 44,650. तो ये काफी बड़ा रेंज है, 42,200 to 44,650. But as we know, Bank Nifty is quite volatile and it will always have a longer range. So it's quite possible that this range will be covered, and accordingly, people should plan their positions. तो अगर निफ्टी का अगर हम ब्रॉड रेंज देखते हैं, तो इट इज अराउंड 1,000 पॉइंट्स, 18,900 टू 19,850. और अगर ब्रॉड रेंज ऑफ बैंक निफ्टी, इफ वी सी, इट इज मोर देन 2,000 पॉइंट्स. सो pretty much in sync. And it is important to note that this kind of range will be there. If we go back to the charts, if we look at weekly chart, Bank Nifty last week low was 43,558, let's say 43,500, and the high was 44,589, let's say 44,600. So it was a kind of narrow range, 43,500 to 45,000. So around 1,500 points. Next week, we are expecting a range of around 2,000 points in Bank Nifty. Similarly, if we look at Nifty on the weekly time frame, last week the Nifty low was 19,500 and high was 19,850. So around 350 points move was there. So next week also it will be in the range of 300 to 500 points, but we have to keep in mind that the overall broader range is around 1,000 points, and in those 1,000 points, people need to adjust their trades. Now we'll look at the global indices. Before that, we'll look at dollar index. Now this is the dollar index. Dollar index matters a lot for Indian market, because अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंडियन मार्केट नॉर्मली कम्स अंडर प्रेशर. उसका रीजन ये है कि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर, यानी हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं. तो जब जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका स्ट्रेन आता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, एंड उसके वजह से इंडिया के स्टॉक्स जो है they come under pressure, and we normally see that whenever dollar is going higher, Indian stocks will go down. But a dollar index अभी थर्सडे फ्राइडे को रेड हुआ है, मतलब डॉलर इज फॉलिंग डाउन, which is good for Indian market. But the other factors also we have to consider, like for example crude oil. अभी क्रूड ऑयल भी फ्राइडे को नीचे गया है, which is again good for Indian market. But looking at the moments or the updates which are happening on the war situation, I mean this is Friday's data. सैटरडे संडे को जो एक्टिविटीज हुआ है, जो अपडेट्स हुआ है वॉर सिचुएशन का, उसकी वजह से द सिचुएशन इज वर्सनिंग फ्रॉम द geopolitical point of view. If we look at SPX, Standard and Poor, I told you what is Standard and Poor initially.
So Standard and Poor on a weekly time frame is below this pink line. Standard and Poor on the weekly time frame is below the pink line. अभी ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे नीचे जाके इसने सपोर्ट लेके ऊपर रिलीफ रैली दिया था. ओके, बट करेंटली as we discussed in Nifty, this is under tremendous pressure now, and it is quite possible that we will see a lower low. लोअर लो का मतलब यह है कि ये पिंक लाइन के नीचे यहाँ पे अभी क्लोज हुआ है, यहाँ से छोटा मोटा रिलीफ रैली आ सकता है, but slowly it might go towards 3910. So from 42,025 to 3910, which is like around 6-7% drop. 6-7% drop in SPX is a very big thing for market. Okay, it is like a stock falling 20-25%. So that kind of drop is possible if the war situation escalates. So we have to keep this in mind. Similarly, if we look at Nasdaq on a weekly time frame, Nasdaq is much better compared to S&P, because these are technology stocks, and technology stocks may not get that much impacted compared to the general market. So SPX, if we see, it is already below the pink line, whereas Nasdaq is still above the pink line on a weekly time frame. So Nasdaq is doing better. Let us look at gold. Now, attack on Israel happened on Saturday, which was 7th of October. Now, if you see the chart here, there was a close on 5th of October. Friday, there was a movement. Okay, now this is called as inside information. किसी को तो पता था कि सैटरडे को कुछ होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच फ्राइडे को काफी बुलिश कैंडल बनाया गोल्ड ने. ऑल्दो अटैक हुआ नहीं था, अटैक हुआ सैटरडे को, और उसके बाद में आप देखिए मंडे को काफी एकदम शूट हुआ गोल्ड. तो मार्केट में अगर हमको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का थोड़ा ट्रैकिंग अगर करना है, या क्या होने वाला है इसका थोड़ा अंदाजा अगर लेना है, तो यू शुड ऑलवेज रेफर टू द गोल्ड चार्ट. गोल्ड चार्ट विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज. जब वॉर टाइप सिचुएशन होता है, ऐसे जब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो गोल्ड विल गिव यू वेरी क्लियर पिक्चर. तो देखिए, ये आप देख सकते हो मंडे से गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिया है, एंड इवन ऑन फ्राइडे ऑल्सो इट क्लोज्ड इन ग्रीन, एंड आई एम क्वाइट श्योर आप देखना मंडे को ये ओपन ग्रीन ही होगा, एंड इट शुड हेड टुवर्ड्स दिस 2064 लेवल. सो अनदर 2-3% हायर फॉर गोल्ड इज क्वाइट पॉसिबल. ये लेवल जो है, ये गोल्ड का अगर ब्रेक होता है, तो समझिए कि वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट होगा, एंड सिचुएशन विल बिकम worst. Okay, let's hope or let's see that this level doesn't break. अभी ये चार्ट्स का ब्यूटी है, चार्ट्स विल गिव यू एन इनसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द फील्ड. हम लोग कुछ रिपोर्टर नहीं है कि हम लोग इजराइल में जाके या पैलेस्टाइन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बट चार्ट्स हमको दिखा रहा है कि इंटेंसिटी क्या होने वाला है, या इंटेंसिटी क्या हो रहा है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द चार्ट्स, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इफ यू नो द चार्ट्स. डैक्स जो कि जर्मनी का इंडेक्स है, इसका भी आप सिचुएशन देख लीजिए. दिस इज ऑल्सो इन अ वेरी बैड शेप. ऑब्वियसली यूरोप के ऊपर काफी इफेक्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो बिलो द पिंक लाइन, विच इज अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑन वीकली टाइम फ्रेम. ओके, सो ओवरऑल यूरोपियन यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा बेरिशनेस है. इंडिया का जो मार्केट है, इफ वी लुक एट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज मच बुलिश कंपेयर टू द यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट, बिकॉज ये मार्केट पिंक लाइन के नीचे गए, हमारा मार्केट अभी पिंक लाइन के काफी ऊपर है, बट हमारा भी मार्केट पिंक लाइन के आसपास आ सकता है, विच इज एज आई टोल्ड यू 18900 पॉसिबल है. सो समवेयर बिटवीन 18700 18900 मार्केट जा सकता है. तो इंडिया का फंडामेंटल स्ट्रांग है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है. एवरी इन्वेस्टर और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. बट ऑल सेड एंड डन, जो ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशर है, सिचुएशन है, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी आ ही रहा है. सो अगेन आई विल समराइज द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. निफ्टी का जो नैरो रेंज है, इट इज 19400 टू 19850, और जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेंज है और नेक्स्ट 1 वीक और सो, इट इज 18900 टू 19850.
तो बायस तो बेरिश ही रहेगा या मोस्टली न्यूट्रल रहेगा. बैंक निफ्टी द ब्रॉडर रेंज इज 42,200 to 44,650. Currently last week close was 43,723. So here I will take a pause for a minute. कुछ questions वगैरह तो आप पूछ सकते हो, otherwise I will move further. You can put your questions in the chat box, or if you want to speak I can unmute you. There is a question, 19,800 will it break? तो अभी 19,800 ब्रेक होगा कि नहीं होगा, एज अ सेड गोल्ड चार्ट के से हमको पता चलेगा. अगर ये गोल्ड का जो चार्ट है, लेट मी गो बैक टू द गोल्ड चार्ट. ये 2070 का जो लेवल है गोल्ड का, दिस इज द डॉलर रेट. अगर ये ब्रेक होता है तो देर इज अ चांस दैट इवन 19,800 कैन ऑल्सो ब्रेक. ओके, बट अभी एज ऑफ नाउ लगता नहीं है. लेट अस गो वन लेवल एट अ टाइम. द सेम पर्सन इज अगेन आस्किंग 2,400 सर ब्रेक होगा क्या निफ्टी के ऊपर? 20,400 विल इट ब्रेक ऑन निफ्टी? अभी सर 20,400 के लिए तो बहुत टाइम है. 19,850 पहले जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होना चाहिए. अभी 19,800 19,900 इस जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है. आई डोंट थिंक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट 19,900 ब्रेक होगा. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. Great. So let us look at the stocks now. I have got some levels for the stocks also. So some buy opportunities. Okay. So this was an old video that I had posted. You can take a look at in my YouTube channel. तो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स बाइंग के लिए काफी कुछ गाइडलाइंस दिए है. ओके, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू लुक एट दैट वीडियो. अभी जो फ्रेश जो बाइंग लेवल्स है, I have given levels for ICICI Bank, for Reliance, for HDFC Bank, for Titan and Asian Paints. Okay. तो ICICI Bank का हम चार्ट देखते हैं. Let us look at the chart of ICICI Bank. Okay, so this is the chart of ICICI Bank. Overall long-term trend bullish है. So it is good to do buying here. Current rate 932 चल रहा है. तो आप 900 के आसपास बाइंग कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 1,000 एंड 1,100. एंड आपको उसमें 780 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए. 780 कहाँ पे आ रहा है? इफ वी लुक ऑन द चार्ट्स, देखिए ये 780 का लेवल है. 795 इज सपोर्ट. हमने थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखा हुआ है. सो ये 780 अगर ब्रेक होता है तो देन देयर कैन बी अ बिग फॉल. सो इट कैन गो इवन बिलो 650, व्हिच इज अनलाइकली, वेरी अनलाइकली. बट मार्केट में यू नेवर नो व्हाट गोइंग टू हैपन. सो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है. सो 900 के लेवल पे बाय कीजिए आप. 1,000 एंड 1,100 का टारगेट रखिए. Reliance, we can buy at 2,200 and target will be 2,500 and 2,700. Stop loss will be 1,950. Let us take a look at the Reliance chart. Reliance काफी bearish है overall, but of course it is one of the largest stocks in India, rather the largest stock. So, and it's always important to have Reliance in your portfolio. तो देखिए अगर चार्टिकली हम देखते हैं तो रिलायंस का जो डेली का जो प्राइस है वो येलो लाइन के नीचे है. इफ यू कंपेयर इट विद आईसीआईसीआई बैंक, ये अभी भी येलो लाइन के ऊपर है, which means Reliance is showing a slightly more bearish momentum compared to ICICI Bank. Just for
analysis purpose I am sharing, but it doesn't mean that you cannot buy Reliance, because overall तो Reliance का भी long term trend जो है वो bullish ही है, right? So as long as this pink line is above this yellow line, the trend is bullish and we can continue to buy these stocks. As you can see here, the support lies around this yellow line, around 2181, and हम लोग जो buy level consider किया है, it is around 2200. So around 2200 buy करके 2500, 2700, these levels we can keep as target, and 1950 as a support. Similarly, HDFC Bank अभी जो लेवल चल रहा है 1522 का अभी करंट लेवल चल रहा है, सो यू कैन बाय इट अराउंड 1500. अगर नीचे जाता है तो 1400 पे आप बाय कर सकते हो. कीप टारगेट ऑफ 1730 एंड 1950 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1250. टाइटन अगेन सिमिलर चार्ट्स आर देयर. टाइटन इज क्वाइट बुलिश डेफिनेटली. अगर ये 5 में से सबसे ज्यादा बुलिश कौन सा है तो टाइटन है. इसमें आप 3150 और 2820 को बाय कर सकते हो. कीप अस टारगेट ऑफ 3040 एंड 3250. स्टॉप लॉस ऑफ 2600. क्विकली आप चार्ट भी देख सकते हैं. See, it is like much above the pink line. ICICI Bank is like above the yellow line. So इससे आपको पता चलेगा कि टाइटन का काफी बुलिश मोमेंटम चल रहा है. Then we have एशियन पेंट्स. 3000 और 2800 पे बाय कर सकते हैं. 3300, 3600 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2600. एशियन पेंट्स का अगर हम चार्ट देखते हैं क्विकली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, so एशियन पेंट्स का बेरिश मोमेंटम चल रहा है, बट these are good levels to buy from the long term point of view. It's one of the very good stocks in Indian market. तो अगर 3000 के आसपास आ रहा है तो it's a good buying opportunity. So 3000 and 2800, these are the buy levels for Asian Paints. So overall अगर हम देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका बाय वन होता है बाय टू होता है, तो 20% to 50% का प्रॉफिट पोटेंशियल है इन ऑल दिस ट्रेड्स. एंड ऑफ कोर्स द टाइम पीरियड विल बी 3 to 6 months. अभी यूएसए मार्केट में तो बहुत ज्यादा फॉल आया हुआ है कंपेयर टू इंडियन मार्केट. सो वी विल लुक एट सम अपॉर्चुनिटीज इन यूएसए मार्केट आल्सो. सो दीज आर द लेवल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, मेटा विच इज फेसबुक, एंड अल्फाबेट, गूगल, राइट. सो ये स्टॉक्स हम लोग बाय कर सकते हैं. एक आधा इसमें हम लोग चार्ट देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट चार्ट ऑफ एनवीडिया. So if you look at this chart of Nvidia, on the long term it is definitely bullish, but short term में इसने काफी volatility है. If we look at it, it went from 500 and from 500 it has gone down to like 400 levels. तो आप buy कर सकते हो इसको. I have mentioned the levels. 390 और 330 पे buy कर सकते हैं with a target of 500 and stop loss of 260. These are levels in dollar. This is not Indian price. These are prices in dollar. Similarly, for Microsoft, you can note down, for Tesla also, Alphabet, Google, and Facebook. There is a question where to buy global stocks. देखिए ग्लोबल स्टॉक्स कुछ ब्रोकर सपोर्ट कर रहे हैं. I personally use ICICI Direct for buying global stocks, and I also recommend investors or clients to go for ICICI Direct for buying the global stocks. And when you are buying global stocks, always remember that you are buying from a broker which is registered with SEBI. Okay, now there are a lot of scammy brokers or platforms, I will say, like eToro, etc., which are not registered with any statutory body like SEBI. So avoid those kind of brokers. Always go for a broker which is registered either with, let's say, if it is an Indian broker, and it should be registered with SEBI obviously, and if it is a broker in some other country like USA, तो वहाँ का वो it should be registered with the central authority there. Just like India में SEBI है, वैसे हर country में there are regulatory authorities for stock brokers. Okay.
So any questions here? Somebody is asking, are we heading into World War 3? Wow. World War 3 का पता नहीं है सर. We don't know. But as I said, गोल्ड का चार्ट फॉलो करो, हमको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं. अगर गोल्ड का प्राइस स्पाइक करता है तो we'll get more insights with where we are heading, whether the war is going away or whether the war is escalating. So gold is the barometer. Gold will tell us. Some guidelines when you are buying the stocks. अभी अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे buy level 1 or 2 दिया हुआ है. Let's say I mentioned for Microsoft you buy at 300 and 270. So there are two levels. So what it means is you should buy in a 1:2 ratio. इसका मतलब ये है कि लेट से अगर आप एक यूनिट बाय कर रहे हो 300 पे तो आपको दो यूनिट बाय करना है 270 पे. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1:2 रेशियो. तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस उसमें कम हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू बुक प्रॉफिट इजीली और कंफर्टेबली. प्लस आपका रिस्क भी उसमें कम हो जाता है. पोजीशन साइज शुड बी 5% टू 15%. इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एक स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए. 5% to 15%, मैक्सिमम 15% के ऊपर आपको एक स्टॉक में पैसा कभी लगाना नहीं चाहिए. दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यू शुड फॉलो. डाइवर्सिफाई अगेन द सेम थिंग. आपको आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 अलग अलग स्टॉक्स रखने चाहिए. यू शुड नॉट पुट ऑल योर मनी इन इन वेरी फ्यू स्टॉक्स. सो दैट इज वेरी रिस्की. बुक प्रॉफिट एंड T1 एंड T2. अभी T1 T2 का मतलब क्या है, जैसे अपना बाय वन और बाय टू है वैसे ही T1 और T2 भी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू टारगेट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट 330 एंड 390. तो आपको 50% होल्डिंग 330 पे बेच देना चाहिए और जो बचा हुआ होल्डिंग है वो 390 पे बेच देना चाहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा एडवांस्ड है बट जस्ट जस्ट ये वर्ड है. एक इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. सो स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है. जो भी स्टॉप लॉस दिया हुआ है डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए. एटलीस्ट 50% क्वांटिटी के लिए आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए. बहुत बार लोग क्या है होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है फिर भी वो लॉस हो रहा है इसलिए बेचते नहीं है. तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूरा नहीं बेचना है तो एटलीस्ट 50% बेचिए, आपका रिस्क उसमें कम हो जाएगा. So there is a question: are you offering any professional services? Yes, there are some professional services. We'll discuss about that. Before that, please make a note of this WhatsApp group, RGS Alpha. So this is a free WhatsApp group which we run, and we share free trade updates here, market analysis, and a lot of information. So it is a group wherein you can make money using the free trade ideas. You will get live updates of the market, and you can also have a lot of learning. एंड सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग. ये QR कोड को आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो मी ऑन ट्विटर. आई कीप ऑन गिविंग वेरियस अपडेट्स ऑन ट्विटर ऑल्सो एंड यू कैन सी माई पास्ट ट्वीट्स. तो आपको पता चलेगा कि ये ट्वीट्स का या इंफॉर्मेशन का एक्यूरेसी कैसा होता है. सो दैट विल गिव यू अगेन मोर क्लैरिटी अबाउट आवर एक्टिविटीज. प्रोफेशनल सर्विसेज जो है RGS कंसल्टिंग के, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है. वी हैंडल द पोर्टफोलियोज ऑफ द क्लाइंट्स ऑन अ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस विद द क्लाइंट्स परमिशन ऑब्वियसली. Then there are advisory services. In advisory services, we charge a fixed fee. There are quarterly fixed return services also, wherein you are given fixed returns on a quarterly basis or on an annual basis. And there are, of course, last but not least, training services also there. So you can discuss about these services with me directly. You can contact me and we can have a detailed discussion on that. There is a question, any Adani stock? You are not given any Adani stock. तो देखिए अभी ये व्हाट आई हैव गिवन यू इज आर सम सिलेक्टेड स्टॉक्स. देयर विल बी मेनी मोर गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. तो ये आरजेएस अल्फा ग्रुप जो है इसके ऊपर आपको बहुत सारे स्टॉक के आइडियाज आते रहेंगे ऑन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. सो आई सजेस्ट यू ज्वाइन दैट ग्रुप एंड फॉलो दैट ग्रुप. तो आपको रेगुलर उसमें अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ट्रेड आइडियाज आते रहेंगे. देयर इज वन मोर क्वेरी, विच बैंक इज बेटर, HDFC बैंक और ICICI बैंक? Okay, for that I will take you to the chart. Give me a second. Okay, ICICI Bank on daily. Very simple. It is above the yellow line.
HDFC Bank on daily, it is below the yellow line, and in fact there is a death cross. अभी ये bearish cross जो हुआ है on the daily time frame, this is also called as a death cross. डेथ क्रॉस जब होता है तो बेरिश मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है. यहाँ पे डेथ क्रॉस के बारे में थोड़ा गूगल कर सकते हो तो आपको आइडिया आएगा. सो करेंटली फ्रॉम द immediate point or time point of view, ICICI Bank is a better choice compared to HDFC Bank. But then HDFC Bank is a very good name and definitely strong fundamentals. So in future it will definitely recover. So it's worth to buy HDFC Bank also. But yes, the at this point of time, ICICI Bank is doing much better compared to HDFC Bank. So I hope that answers your query. Any more questions? I can take a couple of questions more, or we can. Any recommendation for mid cap, small cap? Okay, there is a question about mid cap, small cap stocks. So I have not covered in the in this particular session, but then as I said in the RJS Alpha group, I keep on giving multiple recommendations. So there will be recommendations for mid cap and small cap also. तो RJS Alpha में mid cap और small cap के recommendations मैं दूंगा. आप उसको follow करो and definitely it will be there. So again, if you are not noted, this is the scanning code for RJS Alpha. ये कोड आप स्कैन करके RJS Alpha को ज्वाइन कर सकते हो, और you can reach out to me and I can share the joining details for RJS Alpha. It is free of cost, absolutely free of cost group. Okay, so definitely everybody should take benefit of it. So that's it from my side, friends. Thank you very much for joining. I wish you a profitable week ahead. Please subscribe to the YouTube channel. If you like this video, like it in the YouTube channel, share it with your friends. So again, please take a note of my coordinates. Follow me on Twitter. This is my mobile number. You can reach out to me. Wish you all a profitable week ahead and safe trading. Thank you very much. Goodbye.